हाँ, some are pigs, जैसे fish, birds, reptiles, हाँ, mammals, है ना? क्या है, देखो नेचर ने हर एक का अपना अपना रोल हमें इस इकोसिस्टम में बना के दिया है नहीं? तो अगर हम उस इकोसिस्टम में से अगर कोई भी लाइफ फॉर्म अगर हम एलिमिनेट करोगे, हटाएंगे, उसका बड़ा इम्पैक्ट किससे पड़ता है? हमारे इकोसिस्टम पे पड़ता है, हमारे इस यूनिवर्स से पड़ता है ना? अगर हम छोटे से लाइफ फॉर्म को अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करोगे, होल इकोसिस्टम विल कोलैप्स। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अपने आप को सबसे अच्छी समझते हैं ना, हम कुछ नहीं है। उस इकोसिस्टम में हम एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, बैक्टीरिया पे हम डिपेंडेंट है नहीं? फॉर एग्जांपल, जब हम कोई खाना खाते हैं, हमारे पेट के अंदर बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, वो जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में उसका बड़ा रोल होता है। अगर हमारी बॉडी से उस छोटे से बैक्टीरिया को अगर हम निकाल के फेंक देंगे, इकोसिस्टम विल कोलैप्स। आपका खाना हजम ही नहीं होगा, आपका खाना एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, आप खत्म हो जाओगे। ये चीजें हैं। तो क्या होगा, जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हमारे दुनिया में आ गया, तो लोगों ने क्या किया, अंधाधुंध जो है ना, फॉसिल फ्यूल का जलाना, दरख्त काटना, है ना, एक्सेसिव चीजों को हार्वेस्ट करना अपने मफाद के लिए। ह्यूमन से ज्यादा सेल्फिश दुनिया में कोई नहीं है। जब ये करने लगा तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो गया, कम होना शुरू हो गया। हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो खत्म होना शुरू हो गया। हाँ, अब क्या हो गया है, पूरा दुनिया जो है इसी चीज से क्या हो गया, ये फाइट कर रहा है नहीं? इसीलिए दिया हुआ एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, है ना? जब हम छोटे छोटे चीज हम बोलते थे कि छोटे छोटे, हाँ, कतरे से दरिया बनता है ना? दरिया एकदम एकदम बनता नहीं है, छोटे छोटे कतरे, यहाँ से एक ड्रॉप, यहाँ से एक ड्रॉप, यहाँ से एक ड्रॉप, सब मिलकर एक बड़ा, हाँ, दरिया बन के बहता है ना? सिमिलरली अगर हम छोटे छोटे जगहों पे, लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे, हाँ, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की तरफ हम तवज्जो देना शुरू करेंगे, एक दिन क्या होगा, जो हमारा प्रीवियस जो, हाँ, 800 साल पहले हुआ करते थे बायोडाइवर्सिटी हमारे पास, सेम चीज यहाँ पे रिवाइव होकर हमारे पास आ जाएंगे। एक खुशहाल जिंदगी सबके लिए हमें मिल जाएगा, है ना? तो इसीलिए क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, ताकि हमें समझ आए, है ना, कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, लाइफ फॉर्म क्या है, उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना? अगर इसको बचेंगे तो हमें क्या फायदा होगा, नहीं बचेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा। इन चीज के लिए हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, है ना? सब कुछ हमें वहीं से मिलता है, हमारा हवा बायोडाइवर्सिटी मिलता है। अगर प्लांट नहीं होगा, हमारे पास हवा नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, मर जाएंगे हम लोग, है ना? हमारा प्रोटीन सोर्स बायोडाइवर्सिटी है, हमारे मेडिसिन दवाई जो खाते हैं ना, बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट से मिलता है, ये चीजें हैं। तो उसको मतलब करते हुए यूनाइटेड नेशन काउंसिल ने पहली बार 1993 में ये जो है ना, पहली बार जो क्या कहते 29 दिसंबर को क्या कहते हैं, ये वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे अनाउंस किया था। बाद में 2002 में इसको शिफ्ट किया था, इस डेट को, कब, आज के दिन मई 22 मई को ये क्या कहती है, शिफ्ट किया था, इस डे को चेंज किया था। तब से लेके हम पूरे वर्ल्ड में ये बायोडाइवर्सिटी डे मनाते जा रहे हैं। हाँ, इसकी सिलसिले में हमारे डॉक्टर जैसे उसने एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन हमें बना के लाया है। हाँ, वाइल्ड लाइफ ऑफ लद्दाख देखिए, है ना? उस पे मैडम जैसे अच्छा से देंगे, प्लीज, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Respected faculty members and dear students. So today is the International Biodiversity Day. Like every year, it reminds us that there are variety on diversity of life on this planet, and it also reminds us that it's our responsibility to protect it, to conserve it, for our future generation. So on this International Biodiversity Day, I present a very small presentation on mammalian diversity of Ladakh. So
I introduce my presentation with the word biodiversity. Biodiversity means the diversity of life on Earth. It includes not only plants, animals, but all the plants, animals, microorganisms, and the ecosystem in the ecosystem they form. So when we talk about India, India is one of the richest biodiversity country in the world. In world there are 70 mega biodiversity country, and India is one among them. India has only 2.4% of the land area, but it has 8% of the world recorded species. Then when we talk about the Ladakh, Ladakh lies in the red shadow of the Great Himalayas. The climate is very harsh and it supports a very rare and endemic wild species which include snow leopard, Eurasian lynx, Tibetan argali, and many hardy plant species like sea buckthorn, Artemisia, juniper, etc., which are survived and adapted to this harsh climate. Now, when we talk about the mammalian diversity of Ladakh, first is the blue sheep. In order to understand the students who are not from the science background, I use very less scientific words. So instead of scientific words, I use the local name. The local name of blue sheep is Napo. It is found in Ladakh and the adjoining areas like Trans-Himalaya and many neighboring countries. It lives in an altitude between 3,000 to 5,000 meters above sea level. The name itself is misnomer because blue sheep is not a sheep, neither it is a goat. So it is kept in a very different genus pseudos. That is not a true sheep, not a true goat, but a separate genus. The genus is the pseudos. It means false sheep. When we, how we distinguish blue sheep? Blue sheep is a brownish or bluish in color, and it has a horn which is not fully curved. It is laterally curved, but it is not fully curved. Then next we have it is a blue sheep, group of blue sheep. Then we have a Ladakh Uriel. Ladakh Uriel, the local name is Ladakh. The local name of Ladakh Uriel is Chapo. It is found in Ladakh. In India, it is found in Ladakh, and in Pakistan, it is found only in Pakistan. How we distinguish between this blue sheep and Ladakh Uriel? We can easily distinguish it through their horn. In Ladakh Uriel, the horn is backwardly curved and it nearly joined to the neck region. While in blue sheep, the horn is not fully curved and it is a true sheep. It is not like a blue sheep, it is a true sheep. So it keeps in a genus Ovis. Its population is earlier its population is declining due to hunting and other activities. Now presently it's showing some sign of recovery. Still there is a threat to this wild Ladakh Uriel because its habitat is very near to the human settlement, the human encroachment and the construction of residential and commercial houses are the great threat to this Ladakh Uriel. Next is the Himalayan ibex. It is locally it is called skin. It is a mountain goat which is found in the high mountains and the cliff region of Ladakh, Leh Ladakh, including Zanskar and nearby areas. How we distinguish them, distinguish it from earlier two. It is a goat, so it has a long beard on its chin. Then we have a Tibetan wild ass. It is always young. It is the largest wild ass. It is the color is chestnut with a white underbud. Its distribution is mostly located in the Chamthang Plains and Tibetan Plateau. The next we have Tibetan gazelle. It's neither a goat nor a sheep, but it is a small wild antelope. It's found only in Chamthang Plateau near Anle area. There is an area called Kalak, and this species is found only in this area. Next is we have a Tibetan algar. It is one of the largest sheep in world. It is found in Chamthang area like Thokar Basin and Gyamiru Wildlife Sanctuary, and we can distinguish easily by its big, spirally, backwardly curved horn. Then we have a shan, locally shan, local name shan. It is a thick grey fur with a long tail for balance and a very powerful limbs for living on the steep slope. In India, we have 718 snow leopard, out of which 477 alone was
found in Ladakh alone, and so Ladakh is the highest density of snow leopard is found in Ladakh. It's found throughout the Ladakh, particularly in Hemis National Park and adjoining areas like Changthang, Nubra region. Snow leopard is called as indicator species as well as keystone species. Why it is called as indicator species? Because it indicates the health of the ecosystem. If the population of its prey species is degrade, the snow leopard population also degrade. It means that it indicates the health of the ecosystem. It is also called as keystone species. Why it is called as keystone species? Because it is the apex predator. It controls the population of prey species like blue sheep, Himalayan ibex, Ladakh burial, which in turn regulate the plant species. Then the next is we have Tibetan wolf, which is locally it is called Changku. It feeds on quickers, marmot, and young ungulates, and they are found in plains and mountains at 3,000 to 5,000 meters above sea level. Then we have a palasket. In Ladakh, local name it is called as ribil or takshan. It is a small cat found in cold desert like unlay areas, have a dense fur, short legs which are perfectly adapted for a cold climate. Then we have a Eurasian lynx. It is called as E. It is reported from areas like Warila, Uruse, and Nubra Valley. It is a thick fur which helps to survive in a cold desert habitat. The major threat for the Eurasian lynx is like prey loss. It mostly feeds on small mammals like pika and marmot. So loss of the prey species is the biggest threat to the life of this Eurasian lynx. And another major threat is the tourism activities like snow skating and like near Warila areas, which is their main habitat. The presence of these diverse wild animal and plants indicate the healthy and stable ecosystem. Plants, herbivores, and predators are interconnected. If there is a loss of any one of these species, it can disturb the entire ecosystem. The wildlife and biodiversity of Ladakh are our natural heritage, so it's our responsibility to protect it for our future generation. Thank you. थैंक यू सो डॉक्टर जी, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे लिए आपने प्रेजेंट किया। तो देखा जाए तो लद्दाख एकदम हम एक कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं। यहाँ पे देखें ऐसे देखेंगे ना तो अब देखेंगे कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यहाँ है नहीं है, लेकिन अगर इसको जब हम रिसर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को ना, तो हमें पाया गया है 28 स्पीशीज ऑफ मैमलियन स्पीशीज फ्रॉम लद्दाख। सम 28 मैमल फ्रॉम 400 बर्ड स्पीशीज, सब मतलब हम 400 bird species, 28 mammal species, more than 300 species of insects. Some 300 अभी इसमें चल रहा है। रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा, मैंने खुद एक इंसेक्ट्स ट्रेनिंग से रिकॉर्ड किया है, एंड इट वाज पब्लिश इन द हिंदू वालों ने हमारे जो इस काम को कवर किया था रिसेंटली, कल परसों की बात है ना। तो यहाँ से अभी बहुत चीजें अभी न्यू स्पीशीज का रिकॉर्ड हो रहा है ना। और बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और भी नए स्पीशीज यहाँ पे वहाँ बाहर से यहाँ पे माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। इनवेसिव स्पीशीज को कहते हैं हम लोग। हाँ, फिश स्पीशीज हमारे पास 28 फिश स्पीशीज है। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस शर्मा 2008 में रिपोर्ट किया था, लेकिन ड्यू टू डैम कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू sand excavation and all that, due to anthropogenic activities, their population declined. अभी हमारे पास फिश पॉपुलेशन एकदम कम हो रहा है ना। अभी आप देखेंगे दरिया में हर जगह में कुछ फिश देखने को मिलता है। पहले क्या था, हमें 2008 से पहले हमें कितना था, 2008 के जैसे मुताबिक हमारे पास 28 फिश स्पीशीज है। आप गूगल मिल जाएगा, आप गूगल कर दें, है ना। हमारे पास फ्रॉग स्पीशीज भी है। फ्रॉग तुमको मैं हिंदी से बात हम बोलते हैं जलपा, अगर पे इसको बोलते हैं जलपा, फ्रॉग स्पीशीज। हमारे पास 2 फ्रॉग स्पीशीज है। हाँ, लद्दाख के अदर एरियाज में आपको अभी देखने को नहीं मिलता है। अगर आप जाओगे द्रास में, वहां पे आपको देखने को मिलता है 2 ट्रॉट स्पीशीज हमारे पास रिकॉर्डेड है। हाँ, स्नेक में भी हमारे पास एक स्पीशीज रिकॉर्डेड है, और एक फॉसिल यहाँ से रिकॉर्ड किया गया है स्नेक का, रिसेंटली और कई सेकंड्स वहां से किया था, एक फॉसिल रिकॉर्ड हमारे पास है ना। तो ये सब हमारे बायोडाइवर्सिटी, मोर देन 800 प्लांट स्पीशीज जो है ना हमारे यहाँ पे
800 से ज़्यादा है, 800 स्पीशीज रिकॉर्डेड है पूरा, और उसमें से 400 स्पीशीज के आसपास हमें क्या है, मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट पे लगा हमें बहुत कुछ काम हो चुका है, खासकर हमारे अबा अमची ने इसमें बहुत किया है। सोलर पर सुना होगा, सोलर पे इंस्टीट्यूट लेह में है, उन्होंने रिकॉर्डेड, उनके पास रिकॉर्डेड है पूरा 400 से प्लस जो है ना मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज। ये है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का, इतना बड़ा हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हमारे पास है। हाँ, लेकिन अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे, अगर इसको हम अगर कंजर्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वन डे एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा हमारे पास। हाँ, ये सब खत्म हो जाएंगे। जो मैं रिकॉर्ड मैंने बोला ना कितने स्पीशीज है, देखने को नहीं मिलेगा हमारे पास। अभी आप देखोगे क्रो स्पीशीज जो है ना, क्रो देखा होगा, क्रो फुरोक मत करते हैं, फुरोक पहले हमारे घरों के ऊपर ये मतलब फुरोक मिलते थे, घर के आसपास पूरा, अभी फुरोक देखने को नहीं मिलता है। पिछली बार हार्डली मैंने 2 क्रो देखा सिर्फ, वो भी द्रास में है ना। स्ट्रापा पहले करगिल के हमारे घर के आसपास होता था, है ना, स्ट्रापा में तो ना, अब देखो करगिल के जो सराउंडिंग एरिया से वो देखने को नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, है ना। तो अगर हम लोकली अगर हम इस पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, लोकल पे अगर इनिशिएटिव उठाएंगे, हाँ, अगर हम अपनी जो मफाद के लिए हाँ चीज़ों को हाँ अगर हम रेगुलेट नहीं करोगे इस टाइम पे, तो हमारे जो फ्यूचर आने वाले बच्चे हैं उसके पास कोई भी बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगा। अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगे तो हम भी क्या खतरे में है, हमारा लाइफ भी खतरे में है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। मैं प्रिंसिपल सर को भी शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि इसी सर ने ही हमें ये चीज़ें करने के लिए इनिशिएट किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।